Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 6th of October. Through this video session, I'll be making you understand the important news and editorial for the day. These news are specifically relevant for the civil services examination, and through the completion of this video, you will be able to understand the important news and editorial that is relevant for the examination. The session on daily news and editorial analysis is a daily dose required for the current affairs, and it's a must watch for all the aspirants who will be appearing for the civil services examination. So before I start the discussion, just to give you the highlights and the brief of the news that I'll be discussing with you for today. For today, the first important news is about the uniform anti-terrorism structure. This is the announcement which was made by the Union Home Minister. We'll see the detail to this. The second important news talks about India and Maldives relations. There has been up and downs in the relation. What is the new course of action that Government of India is actually coming up with? We'll see the details to this as well. The third important news is about the immunity that is given to Member of Parliament and Member of Legislative Assembly, and Supreme Court in this context has reserved its order. We'll see the detail to this as well. The other important news talks about the service PMI, some figure and data that would be relevant for the examination. And we'll conclude the session with editorial that is again important and talks about the cases of diabetics in India. What are the reasons that has led to the promotions of diabetics in the country? Something very important and inside details will be shared with you. So stay tuned till end of this video. And without any further ado, let's get started with a detailed discussion. So the first important news is about the uniform anti-terrorism structure, and the government has said, basically the Ministry of Home Affairs said that all the agencies that they are working will have a collaborations with NIA in the states, right? So they will be actually functioning in the close coordination with the NIA. So National Investigation Agency की अगर बात करें, NIA is something which is again very important. 2008 में formation की गई थी. And those of you are appearing for CAPF examination, जिनको CAPF में appear करना, उनके लिए NIA का basics जानना ज़रूरी है, because there can be a direct question from this. Now, what we are discussing in this news that the Union Home Minister has inaugurated third anti-terror conference. Through this anti-terror conference, there was a talked about that how this structure can be devised out with in coordinations with the states, जहाँ पे states और जो central agencies हैं like NIA will having a coordinations, and they will ensure to prevent, this will be a preventive measures from the government to ensure any kind of terrorism activities taking place to avoid the terrorism activities. Now, what the details are there from the third terror conference? This was a third terror conference where the Union Home Minister has actually chaired the conference, and during this conference the intelligence and investigation agencies of the country that include IB, right? Definitely NIA is an investigative agencies, ED Enforcement Directorate, CBI, all this apex body which is working for the country's security internally, externally, were the part of the meeting, and they were specifically looking into the issues and the funding for the pro-Khalistan extremists. अगर PKE की बात करें, in the Canada we have seen also the things that is not working out, जिस वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशंस भी खराब हुई है. प्रो खालिस्तान के प्रोटेस्ट ने इंडिया के जो ओवरऑल पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है कनाडा के साथ वो भी खराब किया. सो दीज थिंग्स विल एक्चुअली वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग. The center and the state agencies have succeeded firmly in curbing the part of any form of terrorism that is arising, right? पिछले 9 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल की है with the legislative process, their mandate and the functioning. The conference has also stressed the central and state agencies to utilize multi-AI based. अगर बात करें artificial intelligence की, this was also incorporated to the central agency. By central agencies, I mean the part of CBI that is operating, IB that is operating, NIA that is operating. So these agencies has been using the technology, the AI-based technology, to have a successful counter-terrorism efforts. And not only for the agencies, अगर training की भी बात करें, जो apex security forces है like NSG, we have a paramilitary forces. These forces are also getting with the trained part of the AI so that
the state of art preventive measures is also there in India. So this was a all discussion that was made in the third anti-terror conference. Now, there was a talk that the part and the concept that has come up is the uniform anti-terrorist structure. इसकी बात की गई है और इस स्ट्रक्चर्स में काफ़ी चीज़ इंट्रीगेट करने की बात की गई where the central government, if you talk about the central government, the state government, they will be devising out the solutions और ये मिल करके एक close coordinations के साथ काम करेंगे. The Union Home Minister, the MHA, the Union Home Minister has said that along with the ruthless approach, I mean there would be no severity and even अगर बात करें किसी भी तरह की compromise नहीं की जाएगी. There will be a uniform anti-terrorist structure that will be established under the purview of NIA और ये जो coordinations होगी between the center and the state will be done in coordination with the National Investigation Agency. It's the apex and topmost institutions in the country when it comes to the investigation part, right? और इसमें किसी भी तरह की hierarchy, structure और जो SOPs होते हैं, standard operating procedures will be taken into considerations और जितने भी anti-terrorism agencies हैं इंडिया में काम कर रही है, whether they are working for the state government or they are working for the central government, they will have a better coordinations ताकि सिर्फ investigations ना हो, preventions पे भी खासा ध्यान दिया जा सके, right? The task of the NIA ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स भी कहते हैं, कई स्टेट्स में ATS की फॉर्मेशन हुई है. STF was first formed in उत्तर प्रदेश की STF काफ़ी बेसिकली दे आर मोस्ट पोटेंशियल फोर्स दैट इज बिंग नोन. तो यूपी की STF जो है दैट इज अगेन वर्किंग फाइन. उसके अलावे स्टेट्स बिहार में भी हैं, बिहार में भी STF, वी हैव STF इन झारखंड. ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में STF की फोर्सेज है. इवन इन तमिलनाडु, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, जो तमिलनाडु की STF है उसने वीरप्पन को भी मारने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, राइट? सो दीज इन्वेस्टिगेशंस विल हैव प्रिवेंटिव मेजर्स जहाँ पे वो इनोवेशंस के थ्रू नए काउंटर टेररिज्म मेजर्स को डिवाइज आउट करेंगे. सो दिस वाज अ thing that was majorly discussed under the uniform anti-terrorism structure. Now the other news that talks about that India look forward for engaging the new Maldivian government. जो वहाँ पे अभी इलेक्शंस हुई हैं उसके बाद नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है that they will be engaging with the Maldivian government with committed to strengthen the relationship in a time tested manner. Why we are taking such action? Because मालदीव गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी इंडियन फोर्सेज हैं वहाँ पे जो डिप्लॉयड है, इंडियन पुलिस फोर्सेज जो डिप्लॉयड हैं, उनको वो वहाँ से रिमूव करने की बातें कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग विच विल नॉट बी गुड एट दिस जंक्शन. सो गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन वेल एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन सो दैट वी हैड अ गुड रिलेशनशिप विद मालदीव. टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, टूरिज्म पॉइंट्स ऑफ व्यू से इट्स अ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर कंट्री लाइक इंडिया. नाउ इंडिया और मालदीव्स के पार्टनरशिप्स की अगर बात करें, हाउ द रिलेशनशिप हैज बीन. So diplomatically, the ties are strong. We have a strong diplomatic ties with Maldives. Maldives holds a strong and strategic importance for Indian Ocean region. अगर Indian Ocean region में बात करें, I'll show you a map. It has a great significance, right? It supports various infrastructure development in the Maldives. Government of India ने काफ़ी ऐसे infrastructure development को support किया है Maldives में, which is actually calling for the infrastructure, right? Infra को लेकर. The focus of the partnership has been India-Maldives, that they are actually working to develop a capacity building. Capacity building की बात की गई है towards the challenges and the priorities. See, if both countries are working, there will be economic values that will be added. There will be a trade value that will be added. There will be other humanitarian assistance that will be added. And during COVID-19, अगर COVID-19 के टाइम की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी हद तक वैक्सीन असिस्टेंस दी थी मालदीव्स को, राइट? सो दीज आर द फैक्ट्स दैट कैन नॉट बी डिनाइड. And they need to have a collaborations to address the challenges in confronting the transnational crimes and human assistance disaster relief. तो ये कुछ important points थे. अगर मैप पर की बात करें इंडिया और मालदीव्स के क्या strategic importance हैं. So this is again important. You see the country, I mean in India we have a state like Kochi जो center है, और उसके बाद त्रिवेंद्रम. These are the region that is directly coming in the Maldives, right? तो यहाँ पे कुछ important माले में जो आइसलैंड है, and even for Lakshadweep, these are the connecting point that are reaching out even to Sri Lanka. तो ये एक बहुत ही important locations है logistic wise और important trade value के हिसाब से. So this make Maldives the more significant country. Now moving ahead with other news, this talks about the Supreme Court intervention in
reserving its order for the re-examination of the ruling on immunity to the member of parliament and member of legislative assembly. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को रिजर्व रखा है एंड दे हैव एक्चुअली रिव्यू द वर्डिक्ट ऑफ 1998 जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी और एमएलए के जो करप्शन के चार्जेस हैं उसके प्रोसिक्यूशंस को लेकर के कुछ बातें कही हैं. द जजमेंट इज ऑल्सो रिजर्व, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज when something is not there in public domain, no assumptions can be made to this. But I'll tell you some of the important point that is relevant for the examination. Now, सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, दे हैव क्वेश्चंस वेदर फर्स्ट द इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी दी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, द एमपीज एंड द एमएलएज, like they should be granted to the legislator who are accused in corruptions. So basically the main point was the one who is accused in corruptions merely on the apprehension that immunity is there, और immunity के अंदर कुछ important sections हैं जो कि constitution में mention है. First is 194 subsection 2, then we have article, this is article 194, then we have article 105 and 2. तो इस दो सेक्शंस में इम्यूनिटी दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को. नाउ सोर्स ऑफ प्रिविलेज की अगर बात करें, फ्रॉम वेयर द सोर्स ऑफ प्रिविलेज इज देयर टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन दैट विल बी रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इफ यू हैव रेड एम लक्ष्मीकांत, आपको ये समझना काफी आसान होगा दैट द पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉज एक्सॉस्टिवली फॉर द पार्ट ऑफ द प्रिविलेज. अगर प्रिविलेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक्सॉस्टिवली बताई नहीं गई हैं. एट प्रेजेंट 5 सोर्सेज हैं जिनमें जिससे कि एक्चुअल में प्रिविलेजेस आती हैं. दीज 5 सोर्सेज इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन वी हैव वेरियस लॉ मेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स फॉर द बोथ हाउसेस, दिस इंक्लूड राज्यसभा एंड लोकसभा, देन वी हैव पार्लियामेंट कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जहां से एक्चुअली बेसिक सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस को रेगुलेट किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट. Now the other thing that is important for you to know is about the individual right and immunities and the collective house of the parliament. This is a favorite topic for UPSC prelims CSA examination. तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं. I'll tell you a comparison. You can even take screenshot for better revision purposes. इंडिविजुअल राइट्स की बात करें, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है कमिटी में. फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल एक्शन, दिस इज ओनली फॉर सिविल एक्शंस एंड नॉट फॉर द क्रिमिनल एक्शन, राइट. Then exemptions in the jury duty, exemptions from being superannuated attending in the court as a witness, and freedom for obstruction, interference and intimidations. ये कुछ individual rights है. Collective rights की बात करें in the house, that is the parliament, they have to discipline and found the breach of the contempt to remove the member in misconduct. They regulate the internal affairs, चाहे debates हो, agenda हो या facilitations हो. वो maintain करते हैं attendance को पूरे members की, so that they have a collective quorum that is maintained. Now, to institute inquiries and the demand of the papers and to call witness to appear, administer oath to them. So these are the collective rights of the house and individual rights of an individual MP or MLs. Now, one thing that is important for you to understand is about the P.V. Narasimha Rao versus state, that is 1998. P.V. Narasimha Rao की केस एक significant केस है. 1993 में JMM, that is झारखंड मुक्ति मोर्चा के bribery scandal में जो MPs थे खास करके उस टाइम पे, he was being involved in taking bribe for vote against the no confidence motion. तो no confidence motions के अगेंस्ट वोट करने में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी. उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एलिज किया गया था कि उन्होंने करप्शंस की हैं, दे हैव टेकन द ब्राइब. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वैश किया था, साइटिंग द पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी विच इज देयर अंडर आर्टिकल 105 एंड 194. तो 105 और 194 क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है. दिस इज प्रीटी रेलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली ये रेलेवेंट है. 105 जो है वो फ्रीडम स्पीच प्रोवाइड करती है फॉर द पार्लियामेंट. दिस इज फॉर लोकसभा and for राज्यसभा, and no member shall be liable to have any proceeding in any court in respect of whatever being said in the parliament or any commitment that or anything that has been said before a committee. This is specifically for parliament. 105 जो है वो पार्लियामेंट से डील करती है, और 194 की अगर बात करें दिस इज फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. तो बेसिक डिफरेंस 194 में ये है कि 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है
और 105 जो है वो पार्लियामेंट के लिए। सो दीज आर द डिफरेंस दैट यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ। Now, moving ahead with the other news, that is service PMI signals September boost. According to the S&P Global, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है. This is a PMI index for the service sector, and it say कि September में जो momentum है वो fast देखी गई है. I have already discussed the PMI yesterday also, जहाँ पे मैंने आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेके बात की थी, right? So if you have not watched it, do check it out. What are the finding that is coming from the PMI? Growth की बात की, growth in the international order has been slowed in the 3-month low. Basically अगर September बात करें 2014 से, so the trend is something which was actually predicted, but और ज़्यादा growth की कोशिश थी. As per the S&P Global PMI, the rise was seen. August में ये 60.1 थी, जो कि September में 61 हुई है. Marginal increase has been witnessed. So 61 is there for the month of September. And the input core inflations is one of the lowest since the 2010. Services firm have raised price at the lowest pace in the 6th month. So this is a trend that we have been witnessing in terms of the growth that is there for the PMI and overall. Now, this is a part of the clip which you can find in the newspaper also. आपको ये newspaper में भी मिल जाएंगे. So September reading indicates that the strongest upstock in 13 years with input cost cooling, service firms has raised the slowest pace in 6 months. तो आने वाले मतलब पिछले 6 महीनों में अभी तक की ग्रोथ सही देखी गई है, and the growth for the international order has been slowed for 3 months. So international order पे 3 months में lowest growth भी report की गई. So there are two finding that is coming. Now, one thing that is important for you to understand is about the services PMI. अगर services PMI की बात करें, इसमें क्या क्या चीजें include होती हैं. From this, you can also expect a direct question in the prelims. To get an economic insight in the sector, PMI एक बहुत ही important indicator है, right? It is an important indicators to get the part of services or any business in the country. और PMI के सर्वे के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये दो चीज, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड इज सर्विसेज, ये दो चीज की जानकारी मिलती है हमें PMI के थ्रू. And this also give a better understanding for the business conditions, valuable informations about the economic backdrop and various markets. The PMI are also used by the Reserve Bank of India, और इस PMI के जो इंडेक्स है उसको Reserve Bank of India भी यूज करती है for the interest rate, जितने भी इंटरेस्ट रेट है उसके लिए, या फिर जो इन्फ्लेशंस है, I'll just write it here, और उसके अलावा जो इन्फ्लेशंस हैं उसके लिए दोनों चीज़ों में ये यूज की जाती है. सो दैट दिस इज एक्चुअली helping RBI to get the further details. Now, moving ahead with the editorial for the day, that is diffusing the tickling time bomb of the diabetics. Very, very important. I mean, इस तरह के सवाल आपसे मेंस में भी पूछे जाएंगे डायरेक्टली कि क्या कंडीशंस हैं इंडिया की. Health related topics is already there in General Studies paper 2. This is also relevant for the case study in General Studies paper 4. Now, what I'll be discussing in the editorial. So first we'll see the consumptions of ultra processed foods. इसके क्या क्या negative consequences हैं. We'll see the food industry, how it is actually working, the concern and the way forward. Now, in June there was a study which was done in collaborations. खास करके 2-3 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर काम किया है. मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशंस, उसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, एंड देन वी हैव यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. These three have actually come up with the details and revealed that 11.4% of Indian, this is 11.4% of Indian have diabetics. तो इतने लोग हैं जो कि डायबिटिक्स से एक्चुअली ग्रसित हैं, और 15.3 करोड़ आर प्री डायबिटिक्स, 28.6 करोड़ आर ओबीज. तो हमें सबसे पहले ये जो 28.6% ओबीज हैं इनको रोकने की जरूरत है ताकि ये डायबिटिक ना हो, विच इज अ ग्रेट प्रॉब्लम एंड अ बिगर प्रॉब्लम फॉर कंट्री लाइक इंडिया. नाउ डायबिटिक की अगर एपिडेमोलॉजी समझे, इंडिया में 61.3 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड, राइट. नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग टाइप 1 डायबिटिक इज 70,200. Nearly 9 lakh people annually died because of this, and Indian get diabetics on average 10 years earlier than the Western counterpart. The annual cost of India due to diabetics was about 38 billion in 2011. So ये कुछ important factual information है जो आप मेंस में एज अ फोल्डर पॉइंट भी यूज कर पाएंगे.
नाउ अगर बात करें कंजप्शंस ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कंट्रोल, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। जो भी पैकेट फूड है, प्रिजर्वेटिव्स फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो काफ़ी अनहेल्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ हाई शुगरी कंटेंट, चिप्स, कुकीज़, प्रोसेस्ड मीट्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक अनहेल्दी, या फिर अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की, वी हैव द पार्ट ऑफ एलडीएल दैट इज देयर। तो एलडीएल और एचडीएल, ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से हाई लिपोप्रोटीन्स होती हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं। आई एम नॉट गेटिंग डिटेल्स इनटू दैट केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट, बट ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ों को अवॉइड करनी है। Diet rich in ultra processed food are high in sugar, fat, salts, and they have a risk of high diabetics. 10% rise in the ultra processed food consumption has led to 15% increase in the diabetic risk. और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ने ओवर ईटिंग, वेट और डायबिटिक्स को बहुत हद तक प्रमोट किया है। दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द एक्चुअल फैक्टर्स दैट हैव प्रमोटेड द हाई लेवल ऑफ डायबिटिक्स इन द कंट्री, राइट? Now, obesity and diabetics has elevated the heart attack and the mortality risks in India. This is specifically the bitter truth that we have to acknowledge. And I personally wanted to tell you, do ensure that you are eating healthy. Do not go for packet foods. Once in a while, in a month, you can have it. But if possible, try to avoid it. Now, food insecurity की अगर बात करें, it is reported that the sale of the sugar sweetened beverages has fallen in 20 years. अगर बात करें कुछ developed countries में, this is specifically for developed countries, उनमें ये गिरावट देखी गई है processed food में। But अगर low और middle income countries में बात करें like India, we have seen an upsurge trend, right? तो यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। Aggressive marketing of the ultra food products, especially for children middle class, is creating a more unhealthy consumption environment and pattern. और ये इंडस्ट्री टैक्टिस है जो कि इंडिविजुअल चॉइस को ब्लेम करती हैं, नॉट द पीपल फॉर द पुअर डाइट। मैं आपको यहाँ पे एक क्लासिकल एग्जांपल देना चाहूँगा सिंगापुर का, राइट? फॉर सिंगापुर, these are the country, right? For Singapore, when if you see, Singapore government actually has a policy जहाँ पे उन्होंने सब्सिडी दी है ऑर्गेनिक फूड पे। जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उन पे उन्होंने सब्सिडी दी, और जो प्रोसेस्ड फूड है उन पर उन्होंने हाई टैक्सेशन किया। इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट एक्चुअली कंट्रोल कर पा रही है इस तरह के हेल्दी हैबिट्स को। Now, some concern, the food industries are also participating in the Eat Right program, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है, एंड दिस इज टेकन केयर बाय द फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फसई है इंडिया में, वो रेगुलेट कर रही है। बट जो इसके आउटकम आने चाहिए वो उस तरह से नहीं है। पार्टनरशिप्स भी जो की गई हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, कंजप्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और जो ब्रिवेजेस हैं, द थिंग्स नीड टू बी रेगुलेटेड एट द हायर एंड, राइट? So now it's a time for FSI to take concrete actions. यहाँ पे actions लेने की जरूरत है, and we to come up with the regulation also, right? Control, regulations, measures and actions. This is something that is essentially required for the packet foods. Now the way forward, if you are writing specifically in case studies, आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन लेने की जरूरत है, जहाँ पे लीगल मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ऑर्डिनेंस बना करके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 123 में ऑलरेडी है, तो इसके थ्रू भी चीज़ों को कंट्रोल की जा सकती है। दे कैन कम अप विद द हेल्दी फूड हैबिट्स, इम्प्लीमेंटिंग द वार्निंग एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर द अनहेल्दी हैबिट्स दैट इज देयर। और पीपल को अवेयर करना, लोगों को अवेयरनेस करना इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस कैन बी डन एट द ग्राउंड लेवल ऑल्सो, पंचायत लेवल पे भी कर सकते हैं। जो आशा वर्कर हैं वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। Now, countries like South Africa, Norway, Mexico, they have been regulating their food labeling और मार्केटिंग के लिए कि कौन से फूड हाई प्रोसेस्ड है, किसमें शुगर कंटेंट कितनी है, और कौन से फूड अनहेल्दी कैटेगरीज में। The government can also show its strength for regulating the food labeling and market. There need to have a proactive role. गवर्नमेंट को यहाँ पे एक प्रोएक्टिव रोल के साथ आगे आने की जरूरत है। And a legal framework ordinance is essentially required to protect the food industry's strategies to regulate the ultra processed food consumption. So this is how you can regulate, and India in general, this is a time, this is a juncture जहाँ पे youth potential को सही guidance देने की जरूरत है। The things that is coming out, process industry जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे regulate करने की जरूरत काफ़ी ज़्यादा अहम है, and this is the need of the hour, right? So this is how you can conclude the way forward for this particular editorial. Now moving ahead with the answers and discussion for yesterday questions. कल का जो सवाल है उसके पहले सवाल के करेक्ट ऑप्शन है बी। मैंने आपसे आर्म्स फोर्स ट्राइब्यूनल
दैट इज AFT के बारे में पूछा, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज इट्स इंडियन मिलिट्री ट्राइब्यूनल दैट वाज फॉर्म्ड अंडर द इंडियन मिलिट्री ट्राइब्यूनल एक्ट 2007. सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, दैट्स जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, एंड पर्सन लाइक अपील अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल कैन बी हर्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट. तो जो थर्ड स्टेटमेंट थे वो इनकरेक्ट थे. डू चेक आउट कि आपने क्या आंसर मार्क किया है और इसमें पार्टिसिपेट करें. अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द Vibro influence, which is C is correct. इसके options 1 correct हैं, options 2 भी correct हैं, and option 3 is also correct. You can read out the further details. You can pause this video and read out the complete explanation in detail. Now moving ahead with the today's MCQ questions for the day. The first question is about the Gems and Jewelry Export Promotion Council. It's a governing body for marketing of the Indian jewelry products. ये एक नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैम्बले सर्टिफिकेट स्कीम्स. इट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. तो ये कुछ 3 ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं. सो हाउ यू कैन पार्टिसिपेट, यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, A, B, C और D. आप अपने सिर्फ आंसर हमें A, B, C, D में लिख करके बताएं. द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द Dumbo octopus. They are deepest octopus in the species that is still alive, and they are found in the temperate climate. So do check out for the correct option. Write your answer in the comment section down below. We are coming up with important questions that a quality question is there, so that it can help you in the CSC examination, right? So this was all about for the daily news and editorial analysis, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, programs, and other courses, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off, and I wish that all of you are doing well. काफ़ी हद तक आप अच्छे से prepare करें. Success will be definitely at your doorstep, and you will reach out to your milestone that you have actually achieved for. Thank you so much. I'm signing off. We'll meet in the next session.